Today's topic is time response analysis of first order system. This is part 2 of our discussion. Part 1 of time response analysis is already available in the channel playlist. Now coming to delay time. Delay time is time taken by response to rise from 0 to 50% of final value or steady state value. Now coming to mathematical expression of delay time, then delay time Td is equal to 0.69 tau, where tau represents time constant of system. Now coming to the next point, that is rise time. Rise time is time taken by response to rise from 10 to 90% of final value or steady state value. Now coming to the mathematical expression of rise time, then rise time denoted as Tr is equal to 2.2 tau, where tau represents the time constant of system. Now coming to an important relationship between rise time and bandwidth, then rise time is equal to 0.35 by bandwidth, where bandwidth is represented in Hertz, or we can say rise time is inversely proportional to bandwidth of system. Now coming to the next point, that is settling time. Settling time is time taken by response to rise from 0 and to stay with 100% of final value. अब अगर इस डेफिनेशन के साथ हम लोग सेटलिंग टाइम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालें तो हम लोग को सेटलिंग टाइम का वैल्यू मिलेगा इन्फिनिटी. इट मीन्स कि अगर आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो वो इनफाइनाइट टाइम लेता है टू अचीव इट्स फाइनल वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू. बट ये जो हम लोग को सेटलिंग टाइम मिल रहा है इन्फिनिटी, दिस इज थ्योरेटिकल सेटलिंग टाइम एंड नॉट प्रैक्टिकल सेटलिंग टाइम. Now coming to the practical settling time, then practical settling time is time taken by response to rise from 0 and to stay with 100% of final value with some predefined error. अब देखो ये प्री डिफाइंड एरर क्या है. अभी हम लोगों ने देखा कि मेरा सेटलिंग टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम थ्योरेटिकली इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगर हम लोग अपने सिस्टम को ये बोले कि अगर आप 98% या फिर 95% ऑफ फाइनल वैल्यू भी अचीव कर लो तो भी हम लोग आपको सेटल्ड मानेंगे. तो ये जो हम लोगों ने एरर कंसिडर किया ऑफ 2% एंड 5%, इट इज़ नोन एज द प्री डिफाइंड एरर. Now coming to the mathematical expression of settling time with 2% error band, then settling time with 2% error band is equal to 4 tau, where tau is the time constant of system. Now coming to the settling time with 5% error band, then settling time with 5% error band for first order system is equal to 3 tau, where tau is the time constant of system.